फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है, स्क्रीनशॉट लगा दिया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th की है फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर। बुक्स नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैं जो नोट्स है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जल्दी ही बुक्स मिल जाएंगी तो बुक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो नोट्स हैं वो बुक्स के अकॉर्डिंग ही है। मैं साथ में स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूँगी जो भी बुक्स के पेजेस के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो एक्सरसाइज होगी, टिक द करेक्ट है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर, राइट है। सेकेंड है द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज टू द रिसीवर थ्रू अ मीडियम, राइट। थर्ड, द सेंडर इज अ पर्सन और entity who start the communication process, right. Fourth, a communication channel is the media through which the sender passes the information to the receiver, right. देन इसके बाद एक और है नेक्स्ट पेज पर, टिक द करेक्ट है। ये भी ट्रू है कि नहीं स्टेटमेंट, इसको हम लोगों को जस्टिफाई करना है। नंबर 1, फॉर्मल फीडबैक अलाउज अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट और ब्लू प्रिंट टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द फीडबैक, ट्रू होगा, राइट टिक करेंगे। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर स्टूडेंट इन अचीविंग सक्सेसफुल लर्निंग, ट्रू। थर्ड है अ कम्युनिकेशन साइकिल इज इनकम्प्लीट एंड irrelevant विदाउट फीडबैक, ट्रू। फोर्थ, द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, ये भी ट्रू होगा स्टेटमेंट, राइट टिक करेंगे। देन इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। जो बुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो है पहले नंबर 1 है इन अ टेलीफोन कन्वर्सेशन अ पर्सन ऑर्डर पिज्जा ऑन द फोन, फाइंड आउट द मेन एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन साइकिल। कौन कौन से कम्युनिकेशन के एलिमेंट यूज हुए हैं यहाँ पर, उसको हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले है सेंडर। सेंडर कौन होगा? द पर्सन ऑर्डरिंग द पिज्जा, जिसने ऑर्डर किया है पिज्जा वो होगी आपका सेंडर। मैसेज, मैसेज क्या था? द ऑर्डर डिटेल टाइप पिज्जा क्वांटिटी, इनकोडिंग स्पीकिंग द ऑर्डर क्लियरली। कम्युनिकेशन चैनल क्या है? टेलीफोन या फोन कॉल। रिसीवर कौन है? द पर्सन एट द पिज्जा शॉप टॉक टेकिंग द ऑर्डर। डिकोडिंग, understanding the customer's order. Feedback, confirmation of the order, for example your order will arrive in 30 minutes. ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम लोग। गिव एग्जाम्पल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने फॉर्म्स हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू अ फ्रेंड फेस टू फेस। सेकेंड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉडिंग योर हेड टू से येस। थर्ड है रिटन कम्युनिकेशन, writing an email or sending a letter. Last, visual communication, showing a graph or chart during a presentation. Third, I like your topic is which type of feedback? Answer is positive feedback. Question number 4 है write one advantage of public communication. Answer is public communication help to reach a large audience at the same time spreading information quickly and effectively. अब इसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर। जो भी लेसन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी तो इसलिए 2 पार्ट में वीडियो आएगी। तो आइए चलिए करते हैं। नंबर 1, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेथड मेंशन? आंसर इज द मेन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन आर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। Question number 2 है what is verbal communication? Verbal communication is the transmission of the messages using words either spoken or written. It includes conversation, presentation, lectures, meeting and discussion. Question number 3 है what are the 2 types of verbal communication? Answer is the 2 types of verbal communication are oral or spoken communication, face to face conversation और phone calls. Second है written communication, जिसमें क्या होगा? एग्जाम्पल है लेटर्स, नोट्स, ईमेल, रिपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। आंसर इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है अ टेलीफोन कॉल बिटवीन अ टीचर एंड अ पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ वन टू वन फॉर्मल
or informal conversation between two individuals. It reduces the chances of misunderstanding. Next question, give two example of interpersonal communication. पॉइंट वाइज लिखेंगे. अ पेरेंट टीचर मीटिंग डिस्कशन. नेक्स्ट पॉइंट, टू फ्रेंड वर्किंग टुगेदर ऑन अ क्लास प्रोजेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन. आंसर इज रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व कन्वेइंग मैसेजेस थ्रू रिटन वर्ड्स इन फॉर्म्स लाइक लेटर, रिपोर्ट्स, एसएमएस, ईमेल्स, मैनुअल्स एंड सोशल मीडिया चार्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. इसको भी पॉइंट वाइज लिखेंगे. अ स्टूडेंट राइटिंग अ लीव एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल. नेक्स्ट पॉइंट, अ टीचर गिविंग रिटन नोट्स टू स्टूडेंट. Next question, what is small group communication? Small group communication happens amongst a group of people such as during press conference, board meetings or classroom discussion. Question 10, give two example of a small group communication. An interview of a candidate with a panel. Point wise ये भी है. Next point होगा a meeting between the principal and the teaching staff. Next question होगा what is the meaning of the word communication. Answer is the word communication is derived from the Latin word communicare meaning to share. Next, define communication in simple words. Answer is communication is the act of sharing or exchanging information, ideas or feeling between two or more people by speaking, writing, signaling or using any other method. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट व्हाट इज द की फैक्टर फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन. आंसर इज clear and concise communication is an important factor for meaningful interpretation of information. Next question है what are the three important parts of communication. Answer is the three important parts of communication are transmission. The sender send a message to the receiver through a medium. Next है receiver. The receiver get the message and interpret it into meaningful information. Last, feedback. The feedback of the meaningful information is conveyed back to the sender to complete the communication cycle. Next question, why are effective communication skill important for a student. Answer is effective communication skill helps a student build confidence, excel in all areas, and develop strong reading, writing, and speaking skills, which lead to success in a personal and professional life. Next question is what are the main objective of effective communication skill mentioned. Answer, one main objective mentioned is the development of interpersonal skill, which helps individual communicate clearly and maintain strong relationship both at school and at home. Next question है what is the communication cycle. Answer, the communication cycle is the process of sending and receiving messages using verbal or non-verbal method. It ensures meaningful interpretation of the messages and involve feedback to complete the process. Next question है what are the main elements of communication. The main elements of the communication are sender, messages, encoding, communication channel, receiver, decoding, response and feedback. Next question, what is encoding and decoding in communication. सबसे पहले encoding, the process of converting the message into a form like symbols, diagrams, action that the intent receiver can understand. Decoding, the process where the receiver interpret and understand the message sent by the sender. Next question is what is the role of the feedback in communication. Answer is feedback is the receiver response to the sender's messages. It helps complete the communication process and ensure the sender known whether the messages was understood correctly. Feedback can be positive, negative, delay or immediate. Next question is how can communication be made more effective according to the page. According to the lesson, communication can be made more effective by using precise and meaningful words, avoiding unnecessary words, and using non-verbal signals like facial expression, gesture, and body languages. यहाँ पर अभी आपका हाफ लेसन कंप्लीट हुआ है. अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो आना बाकी है. इसी में करते कंटिन्यू तो लेसन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाती, तो इसलिए आप नेक्स्ट पार्ट मिस मत करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टेक केयर, बाय.